જૂનાગઢના શિવરાત્રી મેળાને કુંભ મેળાની જેમ રાષ્ટ્રીય સ્તરે વિકસાવવા રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિચારણા થઈ રહી છે, જે માટે આજે જૂનાગઢ ખાતે બેઠક યોજાઈ હતી। આ બેઠકમાં ભવનાથ શિવરાત્રી મેળો સાધુ સંતોની પરંપરા અને આધ્યાત્મિકતા જાળવીને કેવી રીતે વિશ્વ ફલક પર લઈ જઈ શકાય તે મુદ્દે ચર્ચા કરવામાં આવી છે। જૂનાગઢ ભવનાથના મેળામાં વધતી ભીડને કારણે ઊભી થતી अलग अलग समस्याओं अंगे संतो और स्थानिक आगेवानोए सूचनों रजू कर्या हता। खास करीने दामोदर कुंड में नियमित और वैज्ञानिक रीते सफाई, प्रकृति ने कोई नुकसान न थाय ते रीते विस्तारनी सुंदरता केवी रीते वधाराय ते मुद्दे पण चर्चा करवामां आवी। नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवी और अधिकारीओए संतोना सूचनोने गंभीरताथी लईने आगामी दिवसोमां तबक्कावार योजना अमलमां मूकवानी खातरी आपी छे। आ बेठकमां स्पष्ट करवामां आव्युं के संतो, स्थानिक आगेवानो अने तंत्रना सहयोगथी भवनाथ मेळाने वैश्विक ओळख आपવાનો सरकारनो संकल्प छे। आ बेठक बाद भवनाथ शिवरात्रि मेळाना आयोजनने लईने मोटा फेरफारो अने नवी सुविधाओनी आशा व्यक्त करवामां आवी छे। जूनागढ़मां योजायेली बेठकमां नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, शिक्षण मंत्री डॉक्टर प्रद्युमन वाजा, जूनागढ़ना धारासभ्य, संतो, महंतो, जूनागढ़ महानगरपालिकाना पदाधिकारीओ अने वहीवटी अधिकारीओ हाजर हता।